This conference will now be recorded. अपन ना GoDaddy में एक वेबसाइट क्रिएट किया है। वो वेबसाइट मानते कि अपन का Azure पोर्टल को कैसा राउट होगा वो जो भी अपन ये कस्टम DNS देंगे ना सर, वो किधर से अपन वो लेंगे वो Okay, from okay, where got we it, will got it. take that custom DNS from the custom DNS IP from the GoDaddy. Do we take from the custom DNS from the GoDaddy website, or do we create and DNS and keep it on the GoDaddy? Okay. So let me help you to understand about the concept of our domain for Azure Virtual Desktop. ठीक है, देखो Okay. दो चीजें अलग हैं जो आप कह रहे हैं कि आई एम प्लानिंग टू होस्ट अ वेबसाइट या कोई वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हैं. You need to Mhm. understand about the types of domain, the gap between public and private domain, right? First of all, you need to know about the importance of domain controller with the Azure Virtual Desktop. As we discussed before, the Azure Virtual Desktop can give us an option to set up our host pool. The AVD responsible to establish host pool. So host pool is a type of high configuration based machine. Then host pool can give us option to create multiple VMs. Right, sir. And whenever we set up our virtual machine, we have a two different method. One you can proceed with personal, and another you can proceed with shared, right? So Okay. the meaning So of is it personal personal and and shared is something, breadth first or pooled वो होगा सर वो? शेयर्ड के अंदर ब्रीथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट आता है विच इज अ पार्ट ऑफ शेयर्ड. एंड पर्सनल अलॉन है, पर्सनल सिंगल आप डेडिकेटेड मशीन्स के लिए पर्सनल होस्ट पूल पे जाएंगे, राइट? Okay, okay, sir. Got it. द वर्चुअल मशीन अकॉर्डिंग टू द नेम सजेस्ट, जब आप पर्सनल वीएम तैयार करते हैं इट मींस दैट यू वांट टू असाइन डेडिकेटेड यूजर. यू वांट टू असाइन डेडिकेटेड यूजर. आप क्या करना चाहते हैं, एक यूजर आपने बनाया है एबीसी के नाम से, एंड एबीसी यूजर एबल टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन. इस मशीन का एक्सेस किसी दूसरे वीएम के साथ नहीं रहेगा. बट वेन एवर वी कॉन्फ़िगर अ शेयर्ड पूल, जब आप शेयर्ड पूल के थ्रू वीएम क्रिएट करते हैं तो इट विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल सेशन. The meaning of multiple session, you can say that three or four different user, XYZ user, test user, and about demo user. These three different users are able to access same virtual machine at a same time. Got it what I'm saying? This is the actual Mhm. usage of shared pool. Mhm. Is that okay? Yes, sir. Now your question is related कि ठीक है ये सब चीजें क्लियर है, but I wanted to know about the meaning of domain, the usage of domain in our day-to-day or real environment. Correct? This is your question. So AVD is directly associated with one, two, three, and four different types of domain you can set up. It's mandatory for us. The first option you can establish Azure AAD, Azure AAD setup, which is considered as a Azure PaaS server, Azure PaaS AD. Second, you can configure with Azure AD only. And third, you can configure domain on VM. And number fourth, domain on premises. And now you're Domain talking about domain on premises, sir. on premises. लोकल में डोमेन हम लोग तैयार करेंगे and we'll use the same domain users to manage our Azure Virtual Desktop. Okay. Is that okay? Yes, sir. ये जो first Azure AAD is that a PaaS service, sir? It's a Azure PaaS service. Azure PaaS service.
Azure AD PaaS service. ओके, ये बाकी का सर Azure AD and domain और on VM and domain on ये पूरे ये तीन क्या होंगे सर? Azure ओके, जस्ट वांटेड टू क्लियर, आप अपने माइंड में ये सेटअप मान के रखो कि इफ यू वांट टू सेट अप एनी काइंड ऑफ होस्ट pool over a portal without AD or without Azure AD, you are unable to establish your host pool. okay. So it's mandatory you need to establish your domain controller. It may be a virtual machine that you created over a portal. You can use the same virtual machine to establish your Active Directory services, right? Or you can also proceed with the on-premises domain. You can also set up our domain controller services with the help of Azure AAD, which is PaaS service. Azure AD तो आएगा हर एक पार्ट में. Fine. हाँ सर. Now, let's talk about the public domain. The public domain that you purchase from GoDaddy.com. अगर आपने कोई domain purchase किया है from GoDaddy.com, like in my case, I purchased one domain. I purchased one domain with name of teachmecloud.in. This is my domain. .in and .net दोनों मैंने domain purchase कर रखा है. So the same domain you need to associate with Azure AD. आपको Azure AD में इसको कॉन्फ़िगर करना है. कॉन्फ़िगर करने के बाद जो डोमेन आप सेटअप करेंगे उस डोमेन का नाम भी आप सेम ही रखेंगे. Give me 1 minute. Let me show you. This is our portal, and under the portal, we just need to click on security. Under the security, Microsoft Intra ID, Azure AD का नाम चेंज हो गया है. Microsoft Intra ID है right now. So you just need to open Intra ID and go to the custom domain. See, this is the custom domain. How many domains Yes. you are able to find? 4 sir. teachmecloud.in, teachmecloud.net, on microsoft.com, on microsoft.com. Clear? Yes sir. So ये जो दो डोमेन है, दिस इज अनवेरीफाइड बिकॉज हमने उसको ऐड नहीं करा है, बट टीच मी क्लाउड डॉट इन जो है वेरीफाइड है, विच इज लाइव एंड वेरीफाइड. सो Yes sir. नाउ ये जो डोमेन है, यू नीड टू क्रिएट योर सर्वर. आप एज्योर पोर्टल पे बनाना चाहते हैं, लेट मी गिव यू द प्रैक्टिकल मीन्स हाउ यू कैन क्रिएट योर एज्योर AAD. ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एज्योर AAD. It will give us an option like to create Azure AD domain services. See, you need to click here, और ये PaaS services है. You need to open it, create Microsoft Intra domain. यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करेंगे. टीच मी क्लाउड, दिस इज माई डोमेन. यस, आई वांटेड टू यूज सेम डोमेन टू मैनेज. एंड अगेन 1 2 3, रिमेंबर whenever we install our domain controller, not now, अगर थोड़ा पहले पुराने की बात करें, लाइक 28 की 2008 की बात करें या 2003 की बात करें डोमेन में, तो दैट टाइम वी हैव अ 3 डिफरेंट ऑप्शन टू सेट अप आवर डोमेन, set up our server. One is enterprise, another is standard and premium. Right now we have only two, data center and another is enterprise edition. So अभी Okay. PaaS services में ये तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. As per your requirement you can proceed with any. So I'm going to proceed with enterprise because our agenda to manage multiple virtual machine as a client. Clear? Yes sir. Next, and you must need to set up your own VNet. You do not use the default VNet, otherwise it will impact your communication, right? So you always try to set up your own what we can say that virtual network. ठीक Mhm. ठीक है. So you just need to proceed and create. आपको सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जाकर के मैनेज ग्रुप मेंबरशिप, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड आपको यहाँ पे मेंबर्स ऐड कर देने. मेंबर्स मींस द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स दैट यू क्रिएटेड. हैव यू आइडिया अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी? Yes sir. व्हाट इज यूज ऑफ एज्योर एडी? All the members we create in the Azure sir. वही है. मैंने नहीं नहीं नहीं, द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द यूजर्स ऑन एज्योर एडी, उन यूजर से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर पाते हैं? नहीं मालूम सर. Okay,
So actually, the single Azure AD panel responsible to manage lots of platform. Using the Azure AD user, we can manage Office 365 portal. We can configure our means kind of a host pool, and we can manage the Azure services as well, like our back service, and lots of options are available in this particular panel. Okay. Fine. So actually, just wanted to clear one more thing. If you really want to be expert in Azure Virtual Desktop, आपको Azure AD की सारी चीजें आनी चाहिए. Not only the Azure AD, you should know about the each and every options and services which are available in Azure AAD and Azure Active Directory both. Yes, sir. Azure domain, Active Directory domain services में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, and you also need to know about the concept of what we can say that the Azure Active Directory. क्योंकि बिना AD के, बिना domain controllers के, we are unable to perform any task related to the AVD host pool. आपका होस्ट पूल ही नहीं तैयार होगा अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो. इज दैट ओके? Bit confusing, sir. टेल मी प्लीज. नहीं, अभी एडी मेंबर्स इज ऑलरेडी क्रिएटेड मेंबर्स रहेंगे ना सर? जैसा अपन इंट्रा आईडी पे यूजर्स में क्रिएट करेंगे वही होगा सर, या नहीं तो अलग होंगे सर ये? नहीं, सी सी जैसे अपन इंट्रा. लास्ट क्लास में क्रिएटेड क्या बोलते हैं, जीसीपी होस्ट पूल. यूजर और हाँ जी, हाँ उसको होस्ट मेंबर पूल करे, बनाया था, उसको मेंबर बनाया हाँ, था. और एडब्ल्यूएस मेंबर बोल के एक मेंबर बनाए, वही मेंबर रहेगा सर ये? इधर इधर भी ऐड करने का, या नहीं तो दूसरा मेंबर रहेगा सर? Same user you that you created on our on-premises AD, our server AD, we can proceed with the same. उसी यूजर का इस्तेमाल करके हम अपने AVD होस्ट पोल को तैयार करेंगे. ओके. क्लियर? यस सर. ओके, गिव मी अ मिनट. कैन यू हियर मी? यस सर. ठीक है. सी मीन्स अगर आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं ना, या कोई ट्रबल शूटिंग भी करते हैं एवीडी के अंदर, सो मेक श्योर कि आपका डोमेन का वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाओगे. डिड यू ट्राई टू सेट अप योर ऑन इन्वायरमेंट? आपने अपना खुद का डोमेन एवीडी होस्ट पूल तैयार किया था? हाँ सर. सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था? हाँ सर, मैं वो आई वाज स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम सर. वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे. Okay, okay, okay. So every time you are able to activate your हाँ domain, सर. sorry, AVD host pool. यस सर. What are the prerequisite? What are the steps that you used? और आपका डोमेन क्या है? कौन सा डोमेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे? workshop.com सर. .com यूज करते हैं सर डोमेन हमारा. No, no, no. I'm talking about the AD. आपका AD का कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? VM में इस्टेब्लिश किया है? Azure AD यूज कर रहे हो? ऑन प्रोमाइसेस AD यूज कर रहे हो? साइड टू साइड Azure AD VPN से? यूज Azure AD यूज कर रहे हैं सर. Azure AD Azure AD DS. में Azure AAD, राइट? हाँ सर. ओके, आपने कोई VM वगैरह क्रिएट कर रखा है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है जिसपे डीसी वगैरह बना रखा है? Let me share my screen sir, ओके. so that you, so can you हाँ, give me access sir? लेट मी मेक यू प्रेजेंटर. ठीक है, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? Yes sir, I'm doing it.
Is time. Sir, are you able to view my screen, sir? Yeah, I can. Okay. So these are the virtual machines, sir, we have, and this is the Azure AD DS का virtual machine है, sir, हमारा. हाँ तो ठीक है ना. You are using PaaS service. Okay. Can you please open it? Yes, sir. Okay, this is Azure AD DS Management और आपने इस VM के ऊपर Azure AD Connect भी इंस्टॉल किया होगा. Is that correct? Azure AD Connect वो नहीं मालूम सर, कैसा देखना है वो. हाँ ठीक है. That's why ये चीजें क्लियर करनी है. Are you able to take the RDP of this machine? This machine, yes, sir. Okay, please take the RDP. This is your production environment, right? Yes, sir. Okay, fine, no problem. You need to authorize it. I need to whitelist my IP, sir. Okay, you need to configure the NSG, right? हाँ sir. ठीक है ठीक If you could remember, last time also I have logged into this mission. Last time also I logged into this mission. We have seen the FS Logic storage account का issue हुआ, sir. If you remember. है. Yes, yes, yes. Yes, sir. Okay, can you please just close the wizard? Yes, sir. Okay, can you please window plus R, type window plus R, type open run, Okay. and type dsa.msc, dsa.msc, dsa. Oh, sorry, sir. ओके ठीक है. मैं ना आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ विच इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, आपने sir. जो डोमेन बना रखा है ना विच इज worksoft.com, दिस इज योर डोमेन दैट यू परचेज फ्रॉम द godaddy.com या फिर किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने इसको परचेज किया है. इज दैट GoDaddy में करेक्ट? से, sir. Yes, हाँ, sir. मे बी godaddy or another domain service provider. So हाँ, you sir. are using PaaS services. आपने क्या इस्तेमाल किया है? PaaS service इस्तेमाल किया है. So what Okay. happen in PaaS service? What happen in PaaS service? ये जो आप VM आप यूज कर रहे हैं ना, इसमें आपने RSAT इस्तेमाल किया है. Have you heard about RSAT? No, sir. Remote server admin tool. Remote server admin tool that help you to map the entire active directory services from different location to your virtual machine, to your physical machine RSAT के through. Okay. ठीक है. बैक टू एज्योर पोर्टल. मैं आपको इसमें थोड़ा सा कंडीशन बताता हूँ कि ये जो सर्विसेज आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है. कैन यू प्लीज टाइप ऊपर आप टाइप करिए Azure AD Domain. Can you please type over Azure AD Domain जो अभी हमने ओपन किया था अपने अकाउंट में. Sir. Azure AD Domain Service. So yeah, this one. मार्केट प्लेस में पहला ऑप्शन. हाँ,
आपकी कंपनी ने क्या किया है? आपकी कंपनी ने सबसे पहले Azure AD डोमेन को क्रिएट किया है, ठीक है? ये क्या सब है सर? कंटेंट में यू है, कैन सॉरी नॉट थोड़ा सा। क्रिएट एंड मैनेज। हाँ जी, हाँ जी, Does it बिकॉज not? you don't have rights, no worry No, I about it, have. you I don't need have. to activate my PIN, sir. One second. I'm a अच्छा, global वो आपको, administrator, sir. ओके ओके ओके, तो यू नीड टू असाइन द रोल। ये only 8 hours के ही रहेगा सर और कुछ ज्यादा रह सकता भी? बाय डिफॉल्ट ये 8 आवर्स के लिए रहता है। Okay. Already this external unsubscription ऐसा दिख रहा है सर। इसके ऊपर क्लिक करना ओके है क्या मेरे फाइन, को? कैन यू प्लीज ओपन इट? किधर क्लिक करना सर? इधर नहीं आना था? इधर सब्सक्रिप्शन आईडी में या नहीं तो डोमेन में? जस्ट क्लिक ऑन डोमेन नेम। ओके। ठीक है, वी हैव टू वेट। इधर ही ना सर आपने कस्टम डोमेन हाँ, लिखा नो है नो, सर? आप आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके। ओके, सो आप थोड़ा सा रिलेट करिए, दिस इज द डोमेन जो आप एज्योर पोर्टल पे, जो आप अपनी वर्चुअल मशीन पे सारी चीजें एक्सेस कर रहे हैं ना, द हम्म। एंटायर थिंग्स आर मैनेज बाय दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ओके। ठीक है? कैन आई शेयर माई स्क्रीन एंड गाइड यू? And sir, one more thing, I wanted to show another one is uh, while where is the virtual networks? Yeah, in the virtual network, whatever the virtual network which we create, we use a custom domain. फॉर डीएनएस, यस, Yes, sir. फॉर कस्टम डीएनएस, राइट? हाँ, 1024 हाँ, 1025 ये किधर से लेंगे सर? हमारे को मेरे को ये क्वेश्चन आया था। वाई ओके ओनली वी चूज दिस? ये किधर से अपन लिए हैं? ओके सो आई ओके, आस्क्ड माय फ्रेंड, ही सेड गो एंड रिसर्च, एंड आई रिसर्च। मेरे को ये बैकएंड से कैसा ये डोमेन को ले रहा है why we गोडैडी को? why we need to put this ID, you want to know about कि ये यस सर। IP यस। एड्रेस क्यों रखी गई? अब जिस मशीन का यस सर। RDP एक्सेस किया है, जिस मशीन का RDP एक्सेस किया है, कैन यू प्लीज ओपन इट यस सर। एंड check the private IP address of this machine? इधर इधर चेक कर सकते हैं ना सर? CMD आप क्लाउड से भी हो जाएगा, ऑन प्रोमाइसेस से भी हो जाएगा। प्राइवेट आईपी स्टैंडर्ड 26 है सर इधर। ओके, सो अभी जो आपने आईपी देखी वो कितनी थी, जो टू प्रिफर्ड फोर एंड टू डीएनएस फाइव पे? सर। टू टू फोर एंड फोर टू फाइव सर। एंड टू फाइव ओके सर। ओके, ठीक है, बैक टू द वर्चुअल मशीन। इन द वर्चुअल मशीन जो हमारा रूट डोमेन होता है, ठीक है, जो हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर होता है, उसी की आईपी एड्रेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए प्रीफर्ड डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस। ओके। सो इट मींस दैट आपने कौन से वीनेट को ओपन किया था? एप्सन वीनेट को ओपन किया था। हाँ सर। कैन यू प्लीज ओपन द वर्चुअल मशीन दैट यू क्रिएटेड इन एप्सन 01 करके जो वीएम क्रिएट कर रखा है? नो नीड टू ओपन द वर्चुअल मशीन आरडीपी, आपको सिर्फ वीएम पे क्लिक करना है। वो एप्सन का वीएम पे सर? एप्सन का वीएम क्लिक करो। हाँ सर। 10.16.05 ओपन किया सर। Can you please check the private IP address?
10.16.05 सर। ओके, ठीक है। तो अपने सिस्टम में बहुत सारे, कैन यू प्लीज ओपन द vnet that we created? नंबर ऑफ VMs, नंबर ऑफ vnet कितने हैं, एक बार वेरीफाई करो। इधर कितने हैं बल्कि पूछ रहे सर? vnet, हाउ मेनी vnets यू क्रिएटेड, और किस vnet में आपको वेरीफाई करना है? एप्सन के vnet में वेरीफाई करना है, राइट? नहीं, for every VNet which we create, sir, we use only the same custom domain. Every vnet that we created. Yes, sir. If you could see here, 10.2425, and if I go to 2425, UGL VNet ठीक है ठीक है ठीक है 202, ठीक and in this also 2025 you will find. अच्छा इसको नहीं है. And if I choose this one, SA demo 2425, you choose any VNet, sir. It has the same DNS custom domain for every VNet. ठीक है ठीक है। So can you please just let me know about the range of this particular IP address, जो ये 10.0.0.2 2.4 की IP एड्रेस है, कौन से VNet में अवेलेबल है? ADDS VNet हो सकता. ADDS VNet में just need to click on subnet. Click on subnet. Yeah, sir. Only one subnet. Wait. Yes, sir. 2.0/4, right? Yes, sir. 2.0/4, and how many devices are connected? Can you please click on connected devices? ठीक है, यहाँ पे आपकी 2.4 और 2.5 और 2.6 6. दोनों अवेलेबल है, राइट? हाँ सर. दिस इज द DNS IP एड्रेस जो आप हर एक VNet में यूज कर रहे हैं। हाँ सर. Okay, so it means that the ADDS NIC card associated with any virtual machine, और आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो है ADDS समथिंग, ओके, निक कार्ड ये दिखाई पड़ रहा है 2.5 के लिए, एंड फॉर 2.6 Azure ADDS मैनेजमेंट 116, करेक्ट? हम्म. कैन यू प्लीज ओपन दिस निक कार्ड? और 116 सर मैनेजमेंट का. दोनों दोनों, एक बार 6 को ओपन कर लीजिए अलग पेज में, और इसके पहले का दूसरे पेज में ओपन कर लीजिए। जस्ट नीड टू क्लिक हियर, आप क्लिक कर दो बस। अ, अ, जी सर, ये मैनेजमेंट का 16 का है ये, एंड दिस इज द उसका ऊपर का है सर ये. Okay, can you please click on public IP address? Just need to click on IP configuration. Do we have any यस public IP address? Just need to click here. We don't have a public IP address, right? आपने इसको Bastion यस. से कॉन्फ़िगर किया। नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है ना इसमें। नहीं है सर. Azure AD में इसमें है सर, इसका पब्लिक ओके आईपी ओके, कैन यू प्लीज, इसमें नहीं. ओके, पब्लिक आईपी एड्रेस ये 144 आपने जो आरडीपी लिया शायद वही आईपी एड्रेस है ये। जी सर. ओके, इट मींस दैट जो आरडीपी है, कैन यू प्लीज ओपन द आरडीपी ऑफ वर्चुअल मशीन एडीडीएस का, जी सर. एंड टाइप विंडो प्लस आर, रन ओपन करो, एंड टाइप हाँ सर. ncpa.cpl, LCPA n n n LC n
N for national. NC ncpa.cpl. Click on details. 2.6. Okay. अच्छा यही ले रहे सर 10 ये दो No, ले no, रहे हम लोग no. This is the DNS IP address. Can you please just cancel it? Go to the property of this machine. Click properties. No. यहीं पे properties पे जाएंगे. Worksoft.com पे. इधर सर हाँ, click on properties. TCP IPv4. TCP IP4. Click and go to the properties again. Cancel it. Fine. Back to the portal, please. 144, 118. सेम आईपी एड्रेस है ना ये? जी सर 2.2 देखो सर ये आरडीपी का मैं इधर दिख रहा है ना सर 23 ओके ओके. इसका ही अपन आरडीपी लिए सो है एडीडीएस मैनेजमेंट का ओके, कैन यू प्लीज क्लिक ऑन आईपी कॉन्फ़िग? यहाँ पे जो आईपी कॉन्फ़िग 1 दिखाई पड़ रहा है, क्लिक हियर. Identify how many IP address available. Okay, IP config 1. It's a dynamic IP address. Public. Cancel it, please. Click on private IP address. Dynamic private IP address. किधर सर सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस आपकी प्रीफर में आ रही है, सॉरी अल्टरनेट में आ रही है, राइट? आप इसके डीएनएस में क्लिक करिए प्लीज. नो. डीएनएस में वर्चुअल मशीन के उसमें डीएनएस में क्लिक करिए. वीनेट के डीएनएस में. वर्चुअल मशीन के डीएनएस में, सॉरी वीनेट के डीएनएस में जो आईपी एड्रेस दिख रही है 10.0.24 सर 24 एंड 25, यही है. यस यस सर 2425. और हमारे डीएनएस की आईपी एड्रेस क्या थी जो डोमेन कंट्रोलर कनेक्ट किया था? वो 2526 और 2. 26 है 26 है सर ठीक है. हमें 2.5 एंड 2.4 को इधर है आइडेंटिफाई करना है. तो इधर है सर 2.4 पहला मशीन ओपन करिए आप प्लीज. पहला निक कार्ड और दूसरा निक कार्ड. सॉरी, हमने गलती से इसको ओपन कर लिया था. दूसरा निकल क्लिक हियर. ऑलरेडी मैं ओपन दूसरा निकल ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ सर 2.5 का ओके, कैन यू प्लीज ओपन इट? पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है सर नो पब्लिक आईपी ओके. ओके, सॉरी. Let me help you. Can I share my screen and guide you? यस सर Okay, do one thing. Can you please click on ADDS? ADDS पे क्लिक करो. जो अभी हमने तैयार ओपन किया था वर्क स्पेस. क्लिक किया. ठीक है, सॉरी. नो. ऑन ADDS वर्क स्पेस वर्कसॉफ्ट जो आपने क्रिएट किया था उसको ओपन करिए. यहाँ पे नहीं, निक कार्ड नहीं. क्लिक ऑन द पैस सर्विसेज, एडी पैस सर्विसेज. दिस वन पहला विजेट सॉरी, जो सबसे पहला विजेट है उस पर क्लिक करिए. हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आइए. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज. इट विल गिव यू द प्राइवेट आईपी एड्रेस. ठीक है, यही है.
हाँ सर। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है? हम्म। कैन आई शेयर माय स्क्रीन एंड गाइड यू? यस सर, यस सर। थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा समझने के लिए, एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको दोनों तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में क्या होता है। हैव यू आइडिया अबाउट एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, क्या होता है? क्या होता है मतलब नहीं मालूम सर उतना वो। ओके, व्हाट डज इट मीन? whenever we install server 2016 or 2019, ओके, ओके। आपने क्या किया, सर्वर 2016 या 19 को इंस्टॉल किया और इस पे आपने हम्म। ADDS सर्विस को इंस्टॉल कर दिया। ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी domain service, which is considered as a ADDS. Is that okay? Now, ओके। you need to provide two different IP address to this machine manually. अभी हम मैनुअल बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम्म। इसकी IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर की, which is considered as a preferred DNS. आपने इस मशीन की IP एड्रेस कॉन्फ़िगर की है 192.168.1.10 and the alternate IP address, alternate DNS IP address. So we don't have alternate, तो हमने क्या किया, पब्लिक वाला DNS इस्तेमाल कर दिया 8.8.8. Is that okay? हम्म। Now this is the IP address of your machine. 1.10 इस मशीन की IP एड्रेस भी है और preferred DNS भी same IP एड्रेस है। Now question, the usage of these two DNS. We have n number of client computer, like as multiple client machine are available. These all are the client PC, Windows 10, Windows 11, Windows 7, right? N number of client machines are available. These all are the clients PC. And इस ADDS सर्वर को, इस ADDS सर्वर को आप क्या यूज कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इन द सेंस, हैव यू आइडिया अबाउट कन्वर्ट का मतलब? वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना। ओके। वर्क ग्रुप टू डोमेन, आपने क्या किया, इसको वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया। हैव यू आइडिया अबाउट क्यों कन्वर्ट करते हैं? नहीं सर। क्योंकि आप इसको मेंबर बना रहे हो। मेंबर बना रहे हो इन द सेंस कि इस एडी पे आपने यूजर बनाया एबीसी के नाम से, और सेम हम्म। एबीसी यूजर यू कैन यूज टू लॉग इन विद विंडोज 10। आप इस यूजर को विंडोज 10 मशीन से, विंडोज 11 मशीन से, या जो भी मेंबर है डोमेन का, उससे लॉग इन करा सकते हैं। यूजर आपने कहाँ क्रिएट किया, डोमेन पे, और लॉग इन कहाँ पे करा रहे हैं आप, विंडोज में। क्लाइंट ऑपरेटिंग, राइट। सो क्वेश्चन, बिफोर लॉक इन योर यूजर, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहां से, वर्क ग्रुप से डोमेन की तरफ। यू नीड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन कंट्रोलर। जब भी आप कन्वर्ट करेंगे ना, ये दोनों आईपी एड्रेस, प्रिफर एंड अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस, you need to configure in these machines. Configure same 192.168.1.10 and 8.8.8, ये सभी सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, थिंक अबाउट इट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सो इन दिस केस यू आर enabled to our machine from work group to domain. नहीं क्लियर हुआ अभी? सर आपका स्क्रीन तो मुझे एक ही दिख रहा है। आर यू इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन? नो नो नो, आई एम नॉट राइटिंग नाउ। मैंने आपको केवल अभी वन नोट की स्क्रीन शेयर कर रखी है। हाँ सर। मैंने, हाँ, तो वन नोट आपको मिल रहा है अभी? हाँ सर, मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक प्लीज लेट मी नो अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो। आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द डोमेन कंट्रोलर, लोकल डोमेन से हमें स्टार्ट करना था। मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर ये तो।
नहीं, थोड़ा तो आपको अपनी तरफ से ना चीज़ों को देखना पड़ेगा। इन द सेंस लाइक ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट यू हैव टू चेक फ्रॉम योर साइड। ओके। क्लियर है ये? वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस। टेक योर टाइम। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, 2 मिनट का, और मेरे को बताओ फिर क्या है। सर ये वीनेट पे व्हाई डू वी मेंशन अ डोमेन नेम सर व्हेन वी डू नॉट कनेक्ट विद द डोमेन नेम? ओनली बिकॉज ऑफ हमने हर एक डोमेन, हम हर एक बीनेट पेज को कनेक्ट कर रखा है। ओनली बिकॉज ऑफ वी वांटेड टू कन्वर्ट आवर इंटायर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। अगर आपने डीएनएस की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की, अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की है, देन यू आर अनेबल टू कन्वर्ट एनी मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। और अगर आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, सो इट मीन्स दैट इट विल इम्पैक्ट टू आवर एवीडी होस्ट पूल। ये डायरेक्टली आपके एवीडी होस्ट पूल पे इम्पैक्ट करेगा। That means users will not be able to log in. इवन योर होस्ट पूल विल नॉट वर्क प्रॉपरली। यूजर लॉगिन तो बात Okay. की बात है, आपका होस्ट पूल ही नहीं रन करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ना बना बनाया सेटअप दे दिया गया है, राइट? हाँ सर, जहाँ से मैं बना बनाया आराम से। आपको आपको हाँ। एडी का टास्क नहीं दिया गया। आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आप एवीडी होस्ट पूल बना दो। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट टास्क। आप एवीडी होस्ट पूल राइट। बनाते हो, एग्री, बट आपके बैकग्राउंड की जो चीजें वो आपने कभी इंप्लीमेंट नहीं की है, आई थिंक, नहीं सर, राइट सर, राइट? राइट सर, तो 100% दैट्स राइट व्हाई सर। that's why 99% I just completed one AVD project before 2 day। मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम थी, उसका मैंने कंप्लीट कराया। So he's trying multiple times, means he taken up to 6 to 8 hours to set up only AVD host pool। कभी AD join का एरर आ रहा है, कभी VM का एरर आ रहा है, कभी होस्ट इज नॉट अवेलेबल आ रहा है, lots of। So ओके, you do not consider you like you are able to create the AVD host pool, ओके, right? If I share my credential with you, Azure का अगर credential मैं आपके साथ share करता हूँ और बोलता हूँ कि आप AVD host pool का create करो, you are able to do that because आपने prerequisite नहीं समझी अभी, 100% सर। right? So राइट in सर। case of prerequisite, अभी आपने ADDS से बना रखा है, Azure AD Domain से बना रखा है। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आए एंड क्लाइंट कैन क्रिएट देयर एवीडी सेटअप विद डिफरेंट मेथड। हाँ सो सर। ये भी आपको फिक्स नहीं करना है कि एजर एडीडीएस से हमने होस्टफुल बनाया है, क्लाइंट ने अपना एडीडी होस्टफुल किसी दूसरे मेथड से क्रिएट किया है। सो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। टोटल नंबर ऑफ मेथड है 4, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। और एज ए एवीडी इंजीनियर वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी मेथड। Got it? So please do not consider yourself कि you have idea about AVD host pool, I am able to create AVD host pool। नहीं भाई, you need to know वो तो about the अरे मैं backend, then मक्खी टू मक्खी कर रहा हूँ सर, मैं दूसरा करने से सीख लिया मक्खी टू मक्खी। मैं कर रहा हूँ मगर किस चीज के लिए कर रहा हूँ, ये क्यों करना है, वही है मेरा मेन इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स सर। got it, टर्मिनोलॉजी got it। होना चाहिए मुझे। एग्जैक्टली, यू शुड नो अबाउट द बैक एंड कि ठीक है, अभी हमारे पास राइट, यूजर है, क्रेडेंशियल है, डोमेन है, मैं फटाफट से लिखता हूँ उसमें एवडी होस्ट पूल में, फटाफट से बना के 10 मिनट में तैयार कर देता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ। राइट, जो भी क्लाइंट राइट कहता सर, है नीड 25 मशीन, 10 मशीन, पर्सनल पूल चाहिए, शेयर्ड पूल चाहिए, वी आर एबल टू क्रिएट विद इन हाफ एन आवर, वी आर एबल टू हैंड ओवर। बट इफ यू राइट वांट सर। टू implement from scratch, you have to give up to more than 1 hour to set up the AVD host pool।
Right, sir. Is that okay? Yes, sir. So I think I need to start from active directory domain services. Okay, Okay, sir. we need to create our AVD host pool with the help of ADDS. Then we can set up our AVD host pool with the help of Azure Active Directory Domain Services, PaaS services, and then we'll talk about the VPN. हम ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन क्रिएट करेंगे, उस डोमेन को एसोसिएट करेंगे पोर्टल से, एंड देन ट्राई टू सेट अप AVD host pool. Let me help Okay, you to sir. understand about the backend. If anyone Yes, want sir. to set up the AVD host pool, we have a three different method. One, you can set up your domain using Azure AD Domain Service, okay, which is considered as a PaaS service, जो आपके केस में जो आपके सेटअप में रन कर रहा है. Clear? Mhm. Yes, sir. And this is our AVD host pool. Second method we have, you can create virtual machine, create Azure VM, and install ADDS service. Number third, set up on-premises, on-prem server. So on-prem server is जो अभी RDP लिया उसको on-prem server बोलेंगे सर अपन. नो, on-premises server मतलब बेस मशीन, लोकल कंप्यूटर पे जो आपने सर्वर बनाया है उसको हम बोलेंगे ऑन-प्रेम सर्वर. Okay. क्लियर? So Yes, sir. now this is the ADDS in PaaS, in IAS, और ये आपका लोकल है सर्वर. This is local domain. This is Azure VM, ये वर्चुअल मशीन हो गया, और ये हो गया PaaS services. Now what you need to do, आप AVD host pool यहां से भी बना सकते हैं, AVD host pool यहां से भी क्रिएट किया जा सकता है, और AVD host pool यहां से भी क्रिएट किया जा सकता है. इट्स Okay. मैंडेटरी, आपको इन तीनों में से एक पार्ट को डिसाइड कर लेना है. Okay. इन जो तीनों अभी में से हमारा है फर्स्ट वन है ना सर PaaS द फर्स्ट सर्विसेज है वन, ना. यू आर यूजिंग द फर्स्ट वन. यस, यू आर यूजिंग First द one. Yes. फर्स्ट वन. Okay. क्लियर? Yes, sir. सो एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनीवन. इट्स अ फुल्ली डिपेंड अपॉन यू. आप किसी Okay. से भी जा सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. डन. सो व्हाट यू थिंक अबाउट, इनमें से हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपना सेटअप देखना चाहते हैं, हाँ सर. है ना? आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग चल दें कि जिस तरीके से आपका Yes, sir. सेटअप बना है, ऐसा सेटअप हमें बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, राइट? हाँ सर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, और सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन वीनेट विच इज मैंडेटरी. आई डोंट वांट टू यूज द डिफॉल्ट वीनेट, आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन वीनेट. यहाँ पे हम अपना खुद का पर्सनल वीनेट तैयार करना चाहते हैं, एंड देन विल प्रोसीड एंड क्रिएट द ADDS जो पैस सर्विसेज है. AVD class I wanted to set up in central US location. AVD VNet. I'm going to proceed with the same name, AVD VNet. Next, next, and this is the IP address. I don't want to use the default IP address. I wanted to use my own IP address, 192.168 or 172.16.1.0, and I wanted to proceed with 22. So in case of 22, how many IP address you will get?
Okay, this is the blocked 1024. address. 1024 1.20. I'm going to proceed with 24. How many IP address we are able to connect? 256. 256. Let me add one subnet. यहाँ पे एक subnet हम use करने वाले हैं, ADDS subnet. Okay, ADDS subnet, and I wanted to assign 25, यानी 128 IP address हम reserve कर लेते हैं, in future कभी जरूरत पड़ेगी. And now I'm going to जी सर. proceed with the 128 IP address. Click here Yes sir. and Yes sir. create. So now we are doing from the scratch, right sir? How my company Zero, setup was yes, there. yes, Zero yes. से अपन before all do we are starting this. Okay sir. राइट राइट, एंड I'll let you know कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो. एवीडी होस्ट पूल बनाने के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, और उसके पहले कितने स्टेप आप मिस कर चुके हो. गॉट इट. Okay sir. आवर वीनेट इज रेडी टू यूज. मेक श्योर आपके वीनेट का लोकेशन कहाँ पे है और किस रिसोर्स ग्रुप में है. You need to verify each and every point, AVD class central US, and yes, we are using /24. Need to open another page, and let's create Azure AAD service. So you need to find Azure AD domain service. This is the Azure AD domain service. It will take time to create our AVD host. It will take time to create our setup, but no worry about it. I'm going to proceed with same resource group. This is our domain. By Yes default, sir. ये आ रहा है because the same domain we associated with our environment. Correct? Yes sir. Yes sir. Same location, same subscription. teachmecloud.net we have already added. Enterprise, yes, I wanted to proceed with enterprise, and I don't want to use the default DNS. I'm going to use my own domain, on subnet. यही subnet बनाया था हमने अभी. हाँ sir. So I wanted to create our ATDS, Azure ATDS service, using our own domain, Click next, and it will ask you, please provide the AADDC administrator. आपको डीसी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक यूजर यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन Okay. आइडेंटिफाई द यूजर. बैक टू द Azure AD. यहाँ पे हम Azure AD ओपन कर लेते हैं क्योंकि यूजर वहीं से मिलेगा हमें. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. अंडर द इंट्रा Users. आईडी वी जस्ट नीड टू क्लिक यूजर्स, और यहाँ पे कुछ यूजर्स ऑलरेडी होंगे अपने पास. Like we created a GCP user, GCP associated with teachmecloud.in, AWS, and another user available. So I'm going to use GCP user. Open it, click manage group, add members, और यहाँ पे आप नाम दे देंगे किसका, GCP user का. GCP. So Yes. GCP user act like as a administrator. GCP किस तरीके से काम करेगा, as a Admin. administrator task perform करेगा. Okay sir. We successfully added. Yes sir. Close it. No need to do Next. anything. Click next. All synchronization, yes. Security, it's up to you. You want to make any changes with this, you can do that. But यहाँ पे जो भी security है, which is code designed by the Microsoft, so do not change. Next. Okay. Tags. Next. Everything is Everything. okay. If you want to assign the tags, then well and good. Otherwise, no need to do anything. यहाँ पे सब कुछ ठीक है. Basic में all good. I am going to proceed for the review. It will validate the settings that you did. If everything is okay, it will authorize us to create. Make sure ये आपको notification देगा. The following GCP. choice are final and won't be able to be changed after creation. क्या क्या? DNS नहीं बदलेगा, subscription change नहीं कर पाएंगे. Subscription. You are unable to make any changes with resource group. You are unable to make changes with your VNet and subnet.
सबनेट्स, यस सर। जो सबनेट आपने इसके साथ एसोसिएट कर दिया ना, विच आर नॉट अ चेंजेबल, क्लिक ओके, यस सर। and it will take time. Approximately, you have to wait up to 15 minutes, 10 to 15 minutes आप वेट करेंगे इस वीएम को रेडी होने में, इस एडीडीएस सर्विस को रेडी होने में। ओके। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। सो ये पहला टास्क हमने क्या किया, वी क्रिएटेड अ वीनेट। Under the VNet, we are trying to deploy the AD DS service, Azure Domain Services. And once our Azure Domain Service is ready to use, we'll proceed to create virtual machine and configure RSAT service. RSAT create करने के बाद, we can proceed with Azure Virtual Desktop. Means AVD सबसे लास्ट में आएगा, उसके पहले आपको ये प्रीरिक्विजिट फाइनल करनी पड़ेगी। सर अभी ये अपन ये क्या करें सर, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडीडी सर्वर बोलेंगे सर, इसको फेल हुआ। राइट। ओके, फेल क्यों हुआ, कॉन्फ्लिक्ट यू आ नीड गया। टू। ओके, द प्रॉब्लम इज, जो आप सबनेट बनाएंगे ना, मस्ट बी विद नेम ऑफ ADDS सबनेट हाइफन सबनेट। ठीक है, सो नो वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर, और इसमें एक नया सबनेट तैयार कर लेंगे विद सेम नेम। ADDS VNet, you need to create the same VNet। जो VNet का नाम है ना, ये सेम होना चाहिए। लेट मी ओके सेलेक्ट आवर ऑन VNet। यहाँ पे VNet जो है विद, ओके, सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। डू वन थिंग, हमारा जो VNet केवल क्रिएट कर देते हैं, और सबनेट ये अपने तरफ से क्रिएट कर लेगा। ओके। Go to the subnet and let me delete it। AADDS है ना सर, अपन क्रिएट कर, द सेकंड हाँ, स्टेप इज वी नीड टू ADDS subnet। Azure Active Directory Domain Service है ना सर? करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड, और ये अपनी तरफ से खुद से क्रिएट कर लेगा। जी सर। ठीक है, GCP यूजर ऑलरेडी है ही है, हम इसको चेक मार कर लेंगे। फिर भी वो दिखा रहा है ना सर, नेटवर्किंग में वो
नेटवर्किंग एंड बेसिक में वो आया, यूर सबमिट क्यों? Let me check, otherwise we need to proceed with the default subnet, क्योंकि आपने आपके सेटअप में भी डिफॉल्ट सबनेट ही यूज किया गया, डिफॉल्ट वीनेट ही यूज किया गया। First, we need to create a VNet. Then, the subnet should be default, right, sir? Yep. Then, after we need to deploy the AADDS, and that what is the third step, sir? ADDS, then we'll create virtual machine and configure our site. We need to proceed because it's conflicting again and again. So I'll do one thing. Let me create with our default VNet. Default VNet से ही proceed करते हैं इसको. Yes, sir. जो अभी क्रिएट करे सो VNet डिलीट कर देके नया करेंगे सर? The VNet can create by the ADDS. वो खुद ही तैयार कर लेगा. Okay, so I wanted to proceed with default one. अब देखिए यहाँ पे default VNet subnet बनेगा और default VNet भी create हो रहा है, right? हाँ सर. अभी भी नहीं होगा सर, आई बिलीव सो, बिकॉज वो बेसिक में एंड नेटवर्किंग में उधर स्टार दिखा रहा है ना. नहीं, वो तो मैंडेटरी है, उसमें सर्विसेज मैंडेटरी है कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो स्टार्ट दिखेगा ही. ओके. ओके, नाउ इट विल टेक टाइम. ये इंट्रा आईडी पे आ गया है, सो इट विल टेक टाइम. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, जी सर. तब तक ये रेडी हो जी. जाएगा, राइट? जी. जी सर. ओके.
Let me stop recording. This ADDS conference will service now be recorded. is ready to use, right? It's deploying because Sir, your uh, screen sharing. okay, give me a minute, please. Okay, so this is our Azure AAD service is available, and we Sir. just need to click on details, or we just need to click on go to resources. Under the resource, it will initialize their self deployment in progress. You will find the properties and two different IP address, which is which the IP address, private IP address, you can consider as a Custom domain. custom domain, and preferred DNS and alternate DNS IP address. So it is in progress. Meanwhile, what I'm going to do, यहाँ पे एक server 2012 2016 की VM create कर लेते हैं, because we need to configure RSAT. So to create RSAT, create one virtual machine with server 2016, AADDS, server 2016, user ID and password. Next. Use the existing DNS, existing networking, ADDS के नाम से जो तैयार हुआ है. I'm going to proceed with the same VNet because in the same location our ADDS service is running. अभी ये क्रिएट होने के बाद अपन का सर्वर को इसको मर्ज करेंगे सर. हाँ, RSAT के थ्रू सर्वर पे कनेक्ट करेंगे. RSAT. RSAT remote server, Active Directory services, remote server, R remote server admin service, admin tool, Admin port. admin tool, RSAT. P-hole. Okay, cool. Hmm. Okay, virtual machine is ready to use. Let me check. Still is in progress. Total इसमें जो time लगता है more than 1 hour लगता है, because we are unable to get the both IP address, preferred and alternate IP address. We are unable to find. It will provide us two different IP address, 1.4, 0.4, and 0.5 maybe, but it will take time because deployment is in progress. The deployment is in progress. Meanwhile, let me take the RDP of our virtual machine.
सर अगर रिमोट से उधर कनेक्ट कर रहे तो इट नॉट रिक्वायर्ड अपन का आईपी को वाइट लिस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर? बाय डिफॉल्ट इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, अगर आपने कस्टमाइज कर रखा है तब जरूरत पड़ेगी। नहीं अभी आप वाइट लिस्ट करें सर अपन का आईपी, आपका आईपी मिशन पे नेटवर्किंग पे। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा आई एम गोइंग टू ऐड द इनबाउंड पोर्ट फॉर ऑल द आईपी एड्रेसेस। अच्छा आपने एनी लगा दिया, ठीक है। एनी के लिए यूज कर दिया। आई एम जस्ट गोइंग टू अच्छा पुट आरडीपी, make it ओके applicable ओके। for all the users and apply. हम्म। You need to अभी make वो it whitelist में करेंगे आप। whitelist में when we have a, when you want to access your virtual machine from selected user सिलेक्टेड or नेटवर्क्स, ओके। हाँ, यस सर, गॉट इट। या selected users, so that time required, otherwise no यस सर, need. गॉट इट सर। And once you connect your virtual machine, you need to configure preferred DNS IP address and alternate DNS IP address, then install the RSAT service. ओके ओके। Okay, virtual machine is ready to use, but the domain that we established, AAD, is still in progress. It is in progress. We have to wait for a few more minutes, and after that, we'll configure the same private IP address, right?
because we are getting only one IP address right now, Mm-hmm. So until unless, 10.0.0.4. yeah, until unless this get the preferred IP, we cannot move forward, sir. And, so we can use both the IP address, prefer and alternate. So you need to Okay. open our VNet that we created before. Under the VNet, you need to provide the same IP address as a DNS. The Okay. setting that you did in your Yes, sir. production Yes. environment, right? Yes. Yes, sir. 10.0.0.4 and alternate IP address. I'm not sure, but 99% you will get up to 10.0.0.5, Okay. right? But we have to wait for till our Teach Me Cloud domain is not ready to use. We have to wait for them. अभी वो VM लॉन्च करे ना सर, उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं until unless No, no, this. no, no, because our domain is not active yet. So once our Okay. domain will active, then we are able to access our virtual machine. Then we are able to install the RSAT service, and you can perform the task. But before that, you need to open our virtual machines as well. In the virtual machines properties, same IP address आपने configure करनी है. We just need to open ADDS virtual machine. This is the VM I think that we created, right? Go to the networking. Under the networking, we just need to click on Ethernet adapter, click on DNS, and type the same IP address that you configured, 10.0.0.5 10.0.0.4, and 4 and 10.0.0.5. 10.0.0.5. Let me try. वैसे तो होगा नहीं, but let me give you the details like the step that we need to use. Got it, sir. Hello, good afternoon. Yes. Hello. Hi Vinu, good afternoon. Yes. Of this session, it was not covered before, right? This is something different, No, no? no, no. Sorry, Vinu. It's a AVD class. Just allow me 5 minutes. We'll start our session. Okay. 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 Thank you. This is not 365. Okay. So Venkat, what we need to do? We just need to access our virtual machine. I'm हाँ not हो गया ना sure we are सर able अभी to. तो. नहीं अभी नहीं हो पाया ना. Okay, okay. It's तो running properly. Great, great, it's running great. now, sir. Yeah. It's healthy and running. Yes, sir. See, same IP address Yeah. मिल गया I हमें. mean, yes, 1.0, sir. 0.5, Yeah. 0.4. Yeah. Yeah. So what you need to do, if everything is okay, open our domain controller that we created, जो server machine आपने तैयार किया है. You need Uh-huh. to type sysdm.cpl. Okay, it will Okay. redirect you on the page of workgroup and domain. Click change. What is your domain name? Cloud. teachmecloud.in. In. Right, this is the domain controller. Yes, sir. Not connected दिखा रहा है sir. No, no worry, no worry, no worry. We have to wait up. If you are unable to access it, what you need to do, you need to configure manual IP address. ncpa dot cpl, and it will redirect you on the page of Ethernet. ये आपका Ethernet पेज पे जाएगा. Open the properties of Ethernet. Click IPv4. Do not make any changes with IP, but you need to change the preferred DNS IP address 0.0.4, 4. and another Yeah. is 10.0.0.5. Whenever we Yes, sir. configure manual IP address, we'll lost the RDP. हमारा जो RDP है वो lost हो जाएगा.
We will lose the RDP, and now what you need to Now do, we need back to the now virtual now machine. Sorry, yeah, now we need to create the R set ना sir, connect बोलते sir, उसको क्या बोलते sir? RSAT. We need to install the RSAT, but Okay. after connect the RDP of virtual machine. तो RDP अगर आपका connect नहीं हो रहा है, so we just need to open the properties and we just need to click on redeploy. अब हम इसके क्या करेंगे, इसको redeploy कर देंगे, जिससे हमारा RDP एक्सेस हो जाएगा. Okay. रीडिप्लॉय होने का जरूरत क्या है सर? नॉर्मली आरडीपी ले रहा नहीं होगा वो? If you are facing issues related to the RDP, if you are unable to take the RDP of any virtual machine, you need to open the virtual machine's properties and redeploy the VM. आप उसको क्या करेंगे, रीडिप्लॉय कर देंगे. रीडिप्लॉय में क्या होगा, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपका इमीडिएटली फिर से रिफ्रेश होकर के आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा. ओके सर. Because every cloud provider can give us option, do not configure your manual IP address, otherwise you will lose the RDP. So that's why we can proceed and configure the manual IP address, but you need to execute the command of RSAT. You need to manage the RSAT service. ओके The सर. redeployment is in progress. We have to wait for a few minutes and then we'll connect it again. अब ये रीडिप्लॉय होने के बाद then again we need to take the RDP of our mission, and in the Machine and RDP we need to install the R set, right sir? no, we need to convert it from workgroup to domain. Once you take the RDP, you need to convert Okay. it from workgroup to domain. Let me try to take RDP again. Back to the virtual machine and let's connect. Once you connect your virtual machine's RDP, you need to change it from workgroup to domain. Just right click, run sysdm.cpl. Mm-hmm. Let's try to change it again. So before it was not accepting that our IP was not configured in the Ethernet, sir. Right. Now it gives us a user ID and password because we successfully connected with teachmecloud.in. Right? Mm-hmm. आप यहाँ पे देखो teachmecloud.in, हमने वर्क ग्रुप से इसको हटा करके डोमेन का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यूजर कौन सा दिया था हमने, जीसीपी GCP यूजर. sir. हाँ सर. जीसीपी at teachmecloud.in, दिस इज द यूजर और इसका जो पासवर्ड होगा. तो इसका वेब का देना होगा ना सर?
No, see what happens whenever we create our user and assign with the AAD service, it automatically block the access of user due to reason of security. तो आपने कुछ नहीं करना है, जो यूजर आपने असाइन किया है ना, इस यूजर का नेम आप पासवर्ड आप रीसेट कर देंगे. Okay. ओके. एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट चेक कि यूजर आपका ब्लॉक तो नहीं हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका यूजर ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की वजह से. इफ इट इज अनब्लॉक, यू जस्ट नीड टू ओपन इट एंड रीसेट द पासवर्ड. हम इसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, सिंपल. To reset the password, I am going to open incognito wizard portal.azure.com to reset the password. User ID gcp at teachmecloud.in. Reset your password. सर इसका MFA आपने डिसेबल कर दिया है ना सर? MFA नहीं था, MFA नहीं था, MFA already disabled. Haven't configured the MFA. I know it will create problem whenever we convert machine. हाँ सर, So MFA मेरा लाइव पहले से एनवायर disabled है. हाँ मेरा लाइव एनवायरनमेंट में ना सर, आई एम गेटिंग द इशू. I have हम्म. disabled MFA in the conditional policy access में and per हम्म. user में. Still it is asking for the MFA. Okay. The following teach me cloud. Okay, the user is logged. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है the account is logged out and may not be logged onto. Account locked out. Locked out in the sense कि if you are using the wrong password, so our system can automatically lock the user. Account is enabled, no problem. Account enable है. gcp@teachmecloud.in. Otherwise we can also create a new user. हम यहाँ पे नया user भी तैयार कर सकते हैं. It's not mandatory. But while we are creating ADDS, we have added the member ना sir, GCP member add We can करें ना. modify anytime. We can modify anytime. कभी भी हम इसको modify कर लेंगे. It's not mandatory. Okay. तो एक नया user create करके उससे login करा देते हैं. Just need to create new user. AWS, and I wanted to proceed with same display name. No auto generate password. Portal.azure.com. We just need to change it. Back to the ADDS, and in the ADDS properties you will find one option ADDS administrator, और यहाँ पे आप अपना नया user ऐड कर देंगे. अच्छा, Go to the okay, इधर add करने के लिए ना. Okay. members, click add, or this time I wanted to add with AWS at the teachmecloud.net. Next.
Done. Back to the आ domain गया controller, the virtual machine. And this time I wanted to log in with the help of AWS user. Okay, currently it's disabled, no problem. Open it. Open properties of our virtual the user that we created. Go to the properties, settings, account is enabled, already enabled hai. now it is disabled sir Give that domain name slash that account name. Maybe it will work. teachmecloud.in/AWS, right? And Yes. 1, 2, 3. No, sign in disabled.
last 24 minutes. So we will continue the session from here. Monday, tomorrow is a festival here. Hello, Yeah, Venkat. can you hear me, sir? I can hear you. Yes. So that's what I was saying. Vinu is waiting for his session. So we will stop here, sir. I'll make a note of it where we stop. So when we connect again, sir, from on that day we will start from here. Yeah, almost completed. We just need to connect our system. I'll confirm you. I think we need to take a one session by tomorrow. So in the morning, I'll try to give you one session, 1.5 hour session to complete this particular task, that we Sure, can sir. proceed for Tomorrow, the what another means practice. tomorrow? Morning Tomorrow, time, like a like morning time, like 9 a.m. between 9 a.m. to 11 a.m. you will be okay. You'll be confirming the time between 9 a.m. to 11 a.m., sir, or we'll start 9 a.m. and end up 11 a.m., sir. I'll confirm you. I'll text you because I have another session. So let me check with them and confirm you. Sure, sir. Sure, sir. Because Yeah. Thank tomorrow you. is a festival here, sir. Okay, sir. Yeah, Yeah. sir. Bye, Yeah. sir. Same. Same. Bye. Bye.